Hi Rohit, how are you? Hi guys, how are you? Am I audible? आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, ठीक है जी, thank you so much, thank you. It's not you, can you- Let's wait for a while. I guess then we can start. It's not eight even. Let's wait for more 2-3 minutes. And we can start. Uh, doubt class में लूंगा. I'll be taking the doubt class. I'll be taking this session, which is problem solving session. And Bhavya, ma'am, will you take your the class which is from 9, wherein you learn new concepts. Look, thank you, brother. Thank you. चलो इसी बात पे क्या हाल चाल सबके हाउस एवरीवन डूइंग क्या चल रहा है सेशंस कैसे जा रहे हैं सर आपका डिस्कॉर्ड हो गया अरे यार हो गया कोई नहीं मैं भी दे दूंगा how is the sessions going till now we have not connected from last 2 days it was just due to because you guys were going through अपना oops है ना so that's why it was the call of the organization to let you guys give some time so that you can digest the oops मतलब digest कर लो उस टॉपिक को उस चीज को सब कुछ सोच समझ लो then we can conduct this session which we are conducting today only है ना because what I believe is oops is something जो understanding जिसकी understanding होना is very necessary because after that only we can jump to the questions uh, so that's why we had a gap of 2 days. This is first class. Yes, this is first class. Excel. Excel. अच्छा यार इसके लिए ना मुझे पिंग करके याद दिलाना क्योंकि मुझे ना लैपटॉप को अपना खोलना पड़ेगा है ना थोड़ा हेवी कोडिंग का हेवी कोडिंग ठीक है हेवी भी करा देंगे यार हेवी करा देंगे टेंशन मत लो Your voice is a little low. Can you please speak a little louder? Ashfaq, I believe my voice is pretty audible. You can check your system's output voice. I believe I'm loud enough. Still, I'll try to be more loud, right? ठीक है
हैवी कोडिंग यार करेंगे, हैवी कोडिंग करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर अ मोमेंट जहां पर आप लोग सारी चीजों से कंफर्टेबल हो जाओ। सारी चीजों से मेरा मतलब है स्पेशली ऊप से, बिकॉज वी विल बी यूजिंग इट फ्रीक्वेंटली इन एवरी सिंगल क्वेश्चन, है ना। एंड आई डोंट वांट कि भाई हमने जल्दीबाजी में क्वेश्चन में कूद लिए और वी डोंट नो इट प्रॉपर्ली कि कोड में हो क्या रहा है, कोड का फ्लो ही समझ नहीं आ रहा। ऊप्स इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द फ्लो, ठीक है। मतलब ऊप समझ नहीं आ रहा सर, एग्जैक्टली इसी की तो बात कर रहा था मैं। ऊप्स समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऊप्स नहीं समझ आया, इफ यू आर नॉट क्लियर विद ऊप्स, आप कोड का फ्लो ही समझ नहीं पाओगे। इवन इफ सपोज यू आर इन अ सिनेरियो कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, यू कांट सॉल्व इट एंड यू जंप इनटू द सॉल्यूशन, आपने सॉल्यूशन देखा, एंड इवन after reading the solution it is not clear to you, because you cannot understand the flow that where it is getting called, what will be the output after this particular call, and this and that. There are a lot of things, okay. I'm not saying it is difficult, I'm not saying it is difficult, it is very easy, okay, it is very easy, but firstly you should be clear with the theoretical part, मतलब you should be clear with the things कि यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, कैसा इनहेरिटेंस यूज हो रहा है, कंस्ट्रक्टर क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है कि मेथड है ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स है, तो व्हाइल डिफाइनिंग, व्हाइल इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट शुड आई पास द पैरामीटर्स, राइट। सर हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्या, और करूँ क्या? ओके, प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू मी, जिस स्टेज पे आप हो, ठीक है, जिस स्टेज पे आप हो, आई वोंट सजेस्ट टू जंप ऑन द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इट्स नॉट जस्ट कि आपसे हो नहीं पाएंगे, इट्स अबाउट कि अभी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना, उस पर ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चीजों की, चीजें समझ भी आ गई हैं तब भी उसमें इतना डीप डाइव हो जाना कि भाई कुछ भी आ जाए, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाए चीजें, तो हम एटलीस्ट सोच पाएंगे, हम एटलीस्ट फ्लो सोच पाएंगे, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट टू मतलब टू completely understand each and everything, then we can jump into the competitive program। मतलब competitive programming एक मतलब ऐसे हाइप बनी हुई है, ठीक है, ऐसे एक हाइप बनी हुई है, बट इट इज नॉट दैट टफ if you are clear with everything, ठीक है। So I would suggest to emphasize more on solving questions which can give you a better understanding, है ना। तभी ब्रूट फोर्स में ही चल रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है धनंजय? नो प्रॉब्लम मैन, ऐसा कोई टाइम नहीं निकल गया अभी, है ना। अभी तो सी, अभी यू हैव स्टार्टेड विद मॉड्यूल 2, ठीक है, अभी उसके अंडरस्टैंडिंग लो, उसके एटमॉस्फेयर में सेटल हो जाओ, ठीक है, मॉड्यूल 2 के एटमॉस्फेयर में सेटल हो जाओ। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग यू सम टाइम कि थोड़ा एटलीस्ट ऊप्स को ही क्लियर कर लो। अगर ऊप्स क्लियर हो गए ना, बिलीव मी, मतलब काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड उसमें सही में बताऊं तो मैं डिफिकल्ट कंसिडर करता भी नहीं हूँ, आई डोंट कंसिडर इट एज डिफिकल्ट, समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट, राइट। तो बस ठीक है, इतनी टेंशन मत लो कि अभी हम पीछे चल रहे हैं, ब्रूट फोर्स में चल रहे हैं, इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का मैंने जवाब दे दिया। एंड इवन इफ यू फील कि हाँ भाई सब बढ़िया चल रहा है, so you can give a try. I'm saying you can give a try, not just to sit for a day and start solving the competitive program. You can give a try to single question in a day. That will be enough for now. इतने सेटल होंगे तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। डॉक्स में दिया है कि 2 अप्रोच बताना है, ब्रूट फोर्स एंड ऑप्टिमाइज्ड इंटरव्यू में। हाँ, हाँ, मतलब हम्म, वो तो मतलब गिरिराज, फॉर द इंटरव्यू पर्पज इफ यू आर आस्किंग, तो इंटरव्यू में मॉड्यूल ऑप्टिमल अप्रोच पूछेंगे, मॉड्यूल टेस्ट में इंटरव्यू में ऑप्टिमल अप्रोच पूछेंगे। सर ऐसे शीट दे दो मेन क्वेश्चन की, ठीक है, ठीक है, वो भी दे देंगे। उसके लिए मुझे थोड़ा सा आई नीडेड टू डू इट फ्रॉम माय ओन साइड, मतलब ठीक है, ऐसे कोई मतलब मैं अपनी जो मेरे पास चीजें हैं वो उनसे आई नीड टू सेग्रीगेट द क्वेश्चन ना, मतलब मैं सारी ऐसे उठा के नहीं दे सकता। So what I can do, I can segregate them or not. Okay, I'll take some time. Okay, I'll take some time and I'll do the needful and I'll share it with you. तो ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल अप्रोच का मीनिंग भी मालूम नहीं है। अरे मेहरान यार, ठीक है, मैं ये सुनो, जो आप लोग जो इंटरव्यूज दे रहे हो, जो मॉक इंटरव्यूज दे रहे हो, ठीक है,
मैंने पहले भी बोला था फर्स्ट क्लास में, इट इज जस्ट टू मेक यू गाइस कंफर्टेबल विद दैट एटमॉस्फेयर, ठीक है। आई वुड सजेस्ट व्हाट, मुझे किसी ने पूछा था कि सर फ्राइडे को मेरा मॉक इंटरव्यू है, व्हाट शुड आई डू, मुझे किसी ने पिंग करा था, तो मैंने यही बोला था कि गिव इट विद योर फुल प्रिपरेशन, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी। गिव इट विद योर फुल प्रिपरेशन एंड डू द सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस ऑफ हाउ इट वेंट, ठीक है, व्हाट ऑल कुड बी इम्प्रूव्ड, ठीक है, एंड व्हाट व्हाट वेंट वेल, ठीक है, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सुधारना चाहिए। ऑलवेज फोकस ऑन दीज थ्री थिंग्स, ठीक है। आता है मतलब गो विद वॉट एवर यू आर प्रिपेयर्ड विद, ठीक है। ऐसा नहीं कि यू डोंट मतलब दिस विल नॉट बी जस्टिफिकेबल कि यू आर नॉट रेडी विद एनीथिंग एंड यू आर सिंपली जस्ट गोइंग टू मॉक इंटरव्यू कंसिडरिंग इट अ कैजुअल थिंग। नो, इट इज नॉट कैजुअल, ठीक है, इट इज फॉर यू गाइज, ठीक है। सो गो विद द फुल प्रिपरेशन एज मच एज यू कैन, राइट। Huh, go with the full preparation, and if you feel that yeah, we could improve this thing, so go and work on it, okay. Do the self analysis on every after every mock interview. This is what I will suggest to you guys, है ना। So this is very necessary, and mock interview का purpose भी है, the whole sole purpose of mock interviews is this, so that you can self analyze that where do you stand and what all fields you need to improve on, ठीक है। एक्टिव जॉब पोर्टल के 101 सेशन में सब मॉक इंटरव्यूज होते हैं। 101 सेशन मतलब 101 सेशन, आई डिडंट गेट यू ज्योति। सर एक्सेल शीट कैसे मेंटेन करना है, एक डेमो दे देना। नहीं होते, ठीक है, नहीं होते, ओके। एक्सेल शीट में स्पीक a little bit louder please, उत्कर्ष। I'll try to speak a little bit। समझ नहीं आ रहा कौन से क्वेश्चन करे और कौन से नहीं डीएसए में। साहिल यार, कौन से करे कौन से नहीं करे, मैं तो कह रहा हूँ यार सारे ही करो ना, जो रास्ते में आ रहे हैं सबको निपटाते चलो। मतलब दैट दैट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग टोटली, ठीक है। इफ यू फील कि भाई मजा नहीं आ रहा करते और क्वेश्चंस करते हैं, तो गो एंड पिक क्वेश्चन, देयर आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एवरीवेयर। मतलब you will find a hell lot of questions on every single website which is meant for this purpose. Geeks or weeks, you can go W3 schools, मतलब every single website has a hell lot of questions, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन करे कौन से क्वेश्चन नहीं करे, दैट इज टोटली योर कॉल, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट डू क्वेश्चंस व्हिच कैन गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक फर्स्ट, ठीक है। पहले उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है, सॉल्व देम फर्स्ट। अब वो कौन से क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है वो कैसे पता लगेगा, हाउ यू नो, just go with the मतलब start with the basic questions of that particular topic, मतलब very easy questions, start from that, है ना। तो वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वहां से you'll get the understanding and then वहां से आप you can move further according to the level of the questions, ठीक है। पोर्टल में एक ऑप्शन है 101 सेशन का, आई बिलीव ज्योति दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लाइव डाउट, लाइव डाउट क्लासेस, आई बिलीव सो। मॉक इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मॉक इंटरव्यू में सर? टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई होगी कि व्हाट ऑल विल बी कवर्ड इन द मॉक इंटरव्यू, बट ठीक है, मतलब इट विल बी ऑल रिलेटेड टू coding only as far as I know, ना। There may be some questions from the theoretical part, from the most famous topics. What is in the okay, Suman, hi. Give me a second, सर कोड का ट्रेलर समझाना था, ठीक है। रोशन, do one thing, uh, do one thing, allow me to focus on it in the end of the class, na? We can cover whatever is desired in today's class, then we can come to it, because see it is a personal doubt, so we can cover it in the end of the session. That's what I do generally, okay। Let's not hold the whole class for this particular thing only, since it just it needs understanding for the drive. I'll cover it in the end of the class, you just need to remind me, right? So what is the agenda of today's class? It is all about the general doubts which you guys have till now, ठीक है।
आज आप लोगों ने टुडे यू विल अंडरस्टैंड, टुडे यू विल लर्न लिंक्ड लिस्ट इन योर मेन क्लास व्हिच भव्या मैम विल टेक, है ना. You guys need to be very active in that particular class. ठीक है, it is very important topic again. Everything is important. Everything is important. Oops concept in brief. Definitely. Sambat Sahu. Okay. वो भी कर लेंगे. We'll start from this. We'll cover oops concept in brief. That's it. Okay. What about the rest of you guys? Do you want me to cover oops concept in brief in today's class or not? See, the agenda of today's class is to take the general doubts. Nothing related to the questions. See, because as I've told you that there are no specific questions for oops understanding. But if you get the understanding of oops, the rest of the questions you can solve through oops. Okay. Yes, in brief. Yes. Okay. Nice. सर अभी एरेस के लॉजिक ही समझ नहीं आ रहे, इंग्लिश कैसे होगा? धनंजय, एरेस तो यार मॉड्यूल 1 में कवर हो गया मैन. सर आप डाउट कैसे लिया करेंगे, सीक्वेंस अपने एंड से लिया करेंगे या स्टूडेंट के रैंडम डाउट लिया करेंगे? सर मैं जो है आई go with what has been planned for me by the organization, and if you guys want me to take general doubts, by general doubts I mean the doubts of the whole class or the majority of the class. If you guys want me to take that, I'll surely take that. And if you guys want me to cover your general doubts, for that you need to we need to look out, because for the specific doubts you guys have the live doubt session. You can go there and ask your doubts and it will be solved instantly. Like the moment you get doubt, the moment you can solve it through the live doubt session, है ना? That's why it is for you guys. Dhananjay, for your thing, I believe this must have been cleared in module 1. But since it is not clear, I would suggest you to for the arrays specifically, I would suggest you to रैंडम डाउट में वेट बहुत करना पड़ता है, सब 50 लोगों को तो सबका डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा ना. Kumbar, we were talking about the live doubt session that there are 50 people and you have to wait a lot. Am I right? So can you please provide the list of algorithms that are useful? Definitely, I'll provide. Neil. See, everything which you have learned till now is useful. You may find a topic which is not repeated like every single time in every single question, but somewhere somehow it is important. So ऐसा नहीं है कि sir as group ठीक है धनंजय, totally depends upon you, but you have to give extra efforts to it. Don't let it go, don't let the time go. ठीक है, ऐसा ना हो धीरे धीरे मॉड्यूल 2 भी निकल जाए and we are not clear with the module 1 part, so I don't want it for you. What is good for the optimum? ठीक है, ये भी डिस्कस कर लेंगे. रैंडम डाउट में वेट करना ठीक है. कंबर वो मैं यार देखता हूँ, ठीक है, वो मैं देखता हूँ. What is good for the optimal? ज्योतिर्मय, let's discuss it in the end. ठीक है, मतलब this is nothing but just an approach to solve the question. हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा, मैं बिल्कुल सब बता दूंगा. ठीक है, अभी ऊप्स डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज इट इज नेसेसरी, क्योंकि आपका फिर इंग्लिश की क्लास अगर स्टार्ट हो गया और ऊप्स ही नहीं समझ आए तो वो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, ये ब्रूट फोर्स ऑप्टिमल तो हम डिस्कस कर लेंगे, इसकी टेंशन इतनी मत करो. इट इज जस्ट अ नेम टू द अप्रोचेस, नथिंग एल्स एज ऑफ नाउ आई कैन से दैट टू यू. ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई टू बी एक्टिव, लेट्स ट्राई टू बी yes, I'm sorry. I'll jump to the English. If somewhere somehow I get back to Hindi again, then please do let me remind. ठीक है ना? ठीक है. So let's start with oops in brief. ठीक है. In brief, I mean I'll cover everything as much as I can. ठीक है, as much as I can. ठीक है. बाकी कुछ भी डाउट ऐसा हो जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो वो बता देना. ठीक है, वो चैट में ड्रॉप कर देना. एंड बी एक्टिव. ठीक है, बी एक्टिव, बी अलर्ट. whatever I'll say, try to get it in a single go. ठीक है, try to get it in a single go. Okay, let's start. चलो.
It is object oriented programming. It is a kind of programming which is which totally depends upon object, which is oriented around objects. Okay, it it works around objects. Its functioning is around objects. Okay, it totally orients around, it revolves around objects. Okay, so what we get to know through this name is that we are gonna use object. We are gonna use something named as object to develop our logics, to build our logics, to make the flow of our codes. Okay, we'll use something named as object. Okay, how this object will work? What does this object means? What do we mean by class? Okay, this all things. Let's start with, see again. This is something very basic. So let's start with class and object. Okay, class is something which is I would say the blueprint of our flow. Okay, it doesn't exist. It doesn't exist. It is just a no. It is just a flow. It is just a blueprint. It is something which doesn't exist. Okay, which doesn't occupy some space. It doesn't exist physically. Okay, class is something which is defining the flow of a code. Okay, suppose you have a design in your hand. You have a design of a building in your hand. That design is a class. That building will look like this, but you don't have something physically present in front of your eyes, which is occupying some space. We are just configuring the I would say the configuring the features of something. Okay, features of something, and but yeah, but definitely we are configuring the features that this must contain this particular thing, and it must have a red color, I believe, and this particular part of this building should work like this. So we are defining the functionality, we are defining some features of that particular thing, and this whole process of defining things related to a particular thing is known as class. So class contains basically the I would say the flow, I would say the design, I would say the blueprint of the flow which we are building of the code of our code. Okay, and object is physical entity. Object is physical entity. By physical entity, हेलो सर. हाँ जी बताइए. हाँ जी सर, ये दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड में डिफरेंस क्या है? अब ठीक है, मैं उस पर अभी हम ओके सर. 1 second. ठीक है. So object is something which is a physical entity. Okay, which is a physical entity which is coming out from the design, which we have created for a particular flow. Okay, I have created a design for the building, and using that design, I built a building. That building which is physically present in front of me is an object, and this object must be containing the methods and the attributes. ठीक है, the methods and the attributes which were defined in the class. ठीक है, मैंने बोला कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो क्या करके देगा, सम करके देगा. ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो मतलब मैंने एक क्लास बनाई. देयर इज अ क्लास which has a method. ठीक है, which has a method sum. ठीक है, और सम क्या करके देगा, उसके पास दो इंटीजर्स आएंगे, उसको a प्लस b करके दे देगा. ठीक है, बस ये क्लास है मेरी. मैंने एक फ्लो आई हैव डिस्क्राइब्ड अ फ्लो. ठीक है, आई हैव डिस्क्राइब्ड अ फ्लो दैट देयर इज अ फंक्शन. ठीक है, देयर इज अ फंक्शन सम which will do the sum of two integers. ठीक है, and it is definitely this function is inside the class. Just this, I have done this particular thing till now. I've not done any single thing which is existing physically. I've just defined the flow that if I get two integers and if this particular function is being called, I'll simply add these two integers. Nothing much, only this particular thing. But this particular function will come into play when there is a class ABC, suppose. Okay, this particular function will come into play. This particular function which is present inside the class, this will come into functionality. This will come into action when I'll give this particular function
समथिंग टू ऐड, ठीक है। मैं जब तक इसे ऐड करने के लिए दूंगा ही नहीं कुछ, तो ये फंक्शनैलिटी मतलब ये एग्जिस्ट ही कैसे करेगा, ये परफॉर्म ही कैसे करेगा, ठीक है। फॉर दैट आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं इस फ्लो को एक फिजिकल एग्जिस्टेंस दूंगा, फिजिकल अपीयरेंस दूंगा in terms of an object. So that particular physical existence, giving the physical existence to my code is known as object, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो कंटेन करेगा मेरी क्या, मेरे फीचर्स को, ठीक है, मेरे मेथड्स को एंड मेरे एट्रीब्यूट्स को। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब तक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बोलूंगा नहीं उस ऑब्जेक्ट को कि भाई तू इस पर्टिकुलर सम के साथ काम कर, ठीक है, तू इस पर्टिकुलर सम को अपने पास बुला और जो इसमें इंप्लीमेंटेशन है, वट एवर इंप्लीमेंटेशन इट हैज, जस्ट डू इट, जस्ट डू दैट फ्लो, जस्ट गो अकॉर्डिंग टू दैट फ्लो। सो तब तक everything will be just everything will be just written, everything will be just written, there will no functionality, there will be no code play in this particular thing, ठीक है। when we have just defined a class, ठीक है, and when an object comes into play, everything makes sense, everything becomes functional, ठीक है, everything becomes functional. Can we define class as a blueprint or template that is used to write functionalities of objects? Yes. And the object is actually like physically exists, it actually physically exists using that blueprint, ठीक है। It contains all the features which are defined in that particular blueprint, ठीक है। So that is the basic difference between, see, class and object, they are two different entities, ठीक है। They are dependent, definitely they are interdependent, but is there any difference between method and function? There are two names, just method and function, ठीक है। मतलब ऐसा कोई significant difference नहीं है, बहुत vast difference नहीं, ठीक है। There is no such vast difference, ठीक है। ठीक है, ठीक है, इतना बेसिक, सबसे बेसिक चीज थी ये क्लास और ऑब्जेक्ट की, ठीक है। और अब बात आती है हमारे जो ऊप्स के 4 पिलर्स हैं, ऑन विच ऊप्स वर्क, ठीक है, ऊप्स जिस पे काम करता है, ठीक है, जो 4 सोल चीजें हैं हमारे पास, विच इज, कोई बताना चाहेगा? ये तो सबको याद होनी चाहिए, जल्दी से चैट में ड्रॉप कर दो। जल्दी से, इतना टाइम थोड़ा लगता है। अरे जो मैं लिख रहा हूँ वो क्यों बता रहे हो? चारों इकट्ठे लिखो ना यार। लास्ट बज के पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। सी, ठीक है। There must have been different, different understanding, different definitions which you'll find on internet. That encapsulation is binding of the code. Abstraction is, what showing necessary detail and hiding the necessary detail from the client, from the user, from the client. ठीक है. Polymorphism, we have compile time, runtime, of method overloading, method overriding. ठीक है. ये सारी चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, एंड आई आई अश्योर यू कि वो आपको समझ भी आ गई होंगी, बट समवेयर समहाउ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट, यू आर नॉट एबल टू रिलेट, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू रिलेट। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए आई वुड सजेस्ट अगेन टू सॉल्व फ्यू कोड्स अराउंड दीज थिंग्स, ठीक है। अभी ऑब्वियसली मैं टॉपिक तो डिस्कस करने वाला हूँ, आई वुड सजेस्ट टू सॉल्व फ्यू कोड्स अराउंड दीज थिंग्स, ठीक है, अराउंड इनहेरिटेंस, हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स, ठीक है, एंड how abstraction works, how encapsulation works, how polymorphism works. I'll just try to solve few questions around these 4 topics at least, ठीक है। अब इसमें भी जो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा, तो उसको तो डेफिनेटली सॉल्व कर लेना, ठीक है, उसको तो डेफिनेटली सॉल्व कर लेना, ठीक है। व्हाट इज इंटरफेस? सब चीजों का है भाई, सब चीजों का है, चिंता क्यों कर रहे हो अक्षर? डोंट वरी, ठीक है। मुझे चार्ट इधर करने दो। आज ऊप्स खत्म करोगे क्या सर? सर ऊप्स तो खत्म हो चुका है। मैं तो बस एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ
मतलब अबाउट ऊप्स है ना, बाकी ऊप्स तो आई बिलीव खत्म हो चुका है, so there is nothing I believe for me to cover in ऊप्स। ये क्या हो रहा है सर, समझ नहीं आया वहाँ, समझ नहीं आया। क्या समझ आया, देखो आप सेक्शन इनकैप्सुलेशन नॉट गेटिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यार समझ नहीं आया तो सी, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा दूँ तो वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब इट इज वेरी लेंदी टॉपिक। कंस्ट्रक्टिव चेनिंग, हाँ कंस्ट्रक्टिव चेनिंग भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये जो छोटी मोटी यार, ये कैन यू ब्रीफ, या आई ब्रीफ, डोंट वरी, ठीक है। ये छोटी मतलब जैसे कोई इंटरफेस इंटरफेस पूछा था, ये तो छोटी मोटी चीज है, मतलब ठीक है, इट इज नॉट दैट पर्टिकुलर बिग टॉपिक जो मतलब आप इसे पढ़ के भी देखोगे इंटरफेस को तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, इससे कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बट हाँ जो है वो मैं डेफिनेटली कवर कर ही रहा हूँ, है ना। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या हुआ है, ये ऑटोमेटिकली रूप से कहाँ से समझे अच्छी तरह, भाई समझा रहा ना आपका यार, साहिल की टेंशन ले लो। दिस कीवर्ड, अरे भाई समझा दो, दिस भी समझा दो, सुपर भी समझा दो, टेंशन के लिए थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, और ये मेरा set of code having all loops consistent code constructed for that I would need some time, मतलब वो 1 घंटे के सेशन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, रीस्टार्ट कर दो। वो मैं आपकी बात समझ गया, जो भी आपका नाम है, ठीक है। नहीं यार कुछ दिक्कत तो है, ऑनलाइन वाइट बोर्ड, ठीक है, हाँ यहाँ कर लेते हैं बातचीत। ठीक है, चैट किया था यहाँ पे, yes sir, do the code, full code discuss tomorrow, maybe myself Abhishek doesn't getting option to change the ID to no problem. See, I'll do what, I'll make you guys clear with the things which you have confusion in, ठीक है, and I can give you a day to code it out by yourself, ठीक है। मैं कोड करके दिखा दूंगा तो उतना शायद मतलब अच्छी अप्रोच नहीं है, टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई बिलीव इज, ठीक है। तो I'll give you a day, मैं यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर ही रहा हूँ, ठीक है। I'll give you a day to code it out by yourself, ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू कोड इट आउट, बिकॉज बेसिकली मतलब ठीक है काफी चीजें बार डिस्कस हो जाएंगी, तो आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू कोड इट आउट बाय योरसेल्फ, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवर, ठीक है, दो चीजें सर उसमें थ्योरी नहीं रहती है बस। सी oops is if you code it will be better, अच्छा, मतलब मेरे कोड करने से ठीक है, मतलब कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग कितनी कॉन्क्रीट हो पाएगी, मतलब उसमें मुझे डाउट है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सब चीजें सब समझ ही जाओगे तो कोड भी करना ना खुद से, ठीक है। मैं तो कोड कर ही दूंगा यार, मेरा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंबर oops इज लाइक थ्योरी है, ठीक है, बट यू विल फाइंड इट इट्स एग्जिस्टेंस इन एवरी सिंगल कोड, ठीक है, इन एवरी सिंगल कोड, ठीक है। तो वी कांट से कि थ्योरी ही है सर, है ना, फिजिकली भी मतलब एग्जिस्टेंस भी है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंटेक्स क्लियर हो जाए, सिंटेक्स यार सिंटेक्स तो क्लियर हो जाना चाहिए, चलो ठीक है। लेट्स कीप इट फॉर द फर्दर फॉर द फर्दर डिस्कशन, लेट्स कीप इट फॉर, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले मेथड ओवरलोडिंग, मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं, वी आर ओवरलोडिंग अ मेथड, ठीक है। लेट्स गो विद द अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, ठीक है, वरना टाइम ही ओवर हो जाएगा, यही हम क्वेरी ही डिस्कस करते रह जाएंगे, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग इज वेयर वी हैव मोर देन वन मेथड ऑफ सिंगल नेम, मोर देन वन मेथड ऑफ कॉमन नेम, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास आई हैव मोर देन वन मेथड्स ऑफ सिंगल नेम, आई हैव मोर देन वन फंक्शंस ऑफ अ सेम नेम, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन था सम, ठीक है, मेरे पास एक और फंक्शन है सम, ठीक है। अब मैंने और एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज क्लास सी एबीसी, ठीक है, क्लास एबीसी थी, मैंने बोला एबीसी
ऑब्जेक्ट, ठीक है, एबीसी बी इक्वल्स टू न्यू एबीसी, ठीक है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया बी, ठीक है, फॉर क्लास एबीसी, ठीक है। अब मैंने इस बी को बोला कि भाई बी डॉट सम कॉल कर ले, ठीक है। ये क्या करेगा, इस सम मेथड को कॉल कर लेगा, बट यहाँ पर वी हैव टू सम मेथड्स, ठीक है, वी हैव टू सम मेथड्स, वी हैव टू सम फंक्शंस, ठीक है। सो व्हाट particular sum function should it call, ठीक है, how we can segregate that whether to call this particular sum function or this sum function, they may have different functionality. There are two functions which have same name, that doesn't mean that their functionality is also same, ठीक है। So their functionality totally depends upon whatever is written inside them, ठीक है। So how to segregate between these two functions, that if I'll write b dot sum, so I'll be redirecting to the correct function which I desire, ठीक है। So to solve this particular conflict, we have introduced the concept of method overloading, in which we pass parameters, ठीक है, we pass parameters to the functions which are having same name, ठीक है। Let me correct myself, we pass different parameters to the functions containing same name, to the functions with the same name, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि सम मेरे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे मैंने int a int b है, जो दो पैरामीटर्स पास करे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास सम है, int a पास करा है इसमें, ठीक है। टेक इट अवे, 1 सेकंड, हाँ, मैंने इसमें int a पास करा, int b पास करा, int c पास करा। Here I have three parameters, it has some functionality inside it, here I have two parameters, here I have three parameters. So whatever some function is getting called, it depends upon the parameters which I pass while I'll call my function through the object, ठीक है। So it totally depends upon what parameters I'm passing to it, ठीक है। So this particular concept of having a same function, of having a function of same name, of having more than one function of same name, which are differentiated by the number of parameters passed inside it, is known as method overloading. Not just number of methods कि यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे दो नहीं हो सकते, not like this. I have two parameters which are int and int, ठीक है। I can have two parameters over here which have some different data type, here it is accepting some float number, here it is accepting something else, something different data type, something some variable which has a different data type. So that totally depends upon the scenario, ठीक है। But we have to keep in mind that the existence of these two parameters, of the parameters which are in those functions of the same name, those must be different basically, ठीक है। What if we have common parameter with same name but return type differs? हाँ ठीक है, मैं ये भी explain करता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा हो जाएगा। Basically we can make just if we are create single parent class reference and access more than one object from it. Single parent class, so Bharat, you are saying that if we have a single parent class reference and access more than one object from it, is it illegal? You mean to say that we can we create more than one object from a single class? If you're saying this, yes, the answer is yes. We can create multiple objects from a single class. ठीक है, ठीक है। What if we have common parameter with same name but return type differs, ठीक है। If return type differs, definitely you must have declared it something like that. If return type is null, so it must be static void sum, ठीक है, it must be static void sum. And if the return type is integer, that must be static int sum, ठीक है। So here you have initialized the function differently, so it will work accordingly, ठीक है ना, it will work accordingly, मतलब कुछ वो आपका वो रिटर्न ही नहीं करेगा, कुछ तो वो वहां पे ही डिफरेंशिएट होगा, डेफिनेशन में डिफरेंशिएशन आ जाएगा उसके, ठीक है। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट अ कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ठीक है। रुक जाओ, सवाल बहुत है। सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मीन? मीन इज द फंक्शन वेयर इन यू नो मतलब mean is everything, मतलब नाम से ही बहुत चीजें क्लियर हो रही है कि where you generally find inputs, getting inputs from the terminal, where you generally call things, ठीक है, wherein you generally create an object for a class, ठीक है। Those main things, those general things which are basically done inside the main, it is basically a predefined function, ठीक है, it is basically a predefined function from the what does this mean sir? यार ये बहुत बेसिक चीज है, इतनी चीजें भी कवर करने चला गया ना मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है।
तो इतनी चीजें समझो, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतनी चीजें समझो कि मेथड ओवरलोडिंग से आप क्या क्या समझ गए, ठीक है। अब जो है मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसे ड्रैग करके मेन इज द प्रोग्राम से मतलब मेन से ही डेफिनेटली स्टार्ट होता है, ठीक है। यार ये तो बहुत छोटा स्पेस है। ठीक है, मुझे चीजें इरेज करनी पड़ेंगी, ठीक है, मुझे चीजें इरेज करनी पड़ेंगी, तो अकॉर्डिंगली मैनेज करते रहना, ठीक है, अकॉर्डिंगली मैनेज करते रहना, ठीक है। ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग का, ठीक है, ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग का। अब मैं मेथड ओवरराइडिंग की अगर बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट मेथड ओवरराइडिंग, आई वुड से दैट देयर आर टू क्लासेस, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग इज मतलब आई हैव एक्सपीरियंस इट रिसेंटली, ठीक है, मतलब मुझे पता था कि मेथड ओवरराइडिंग इज समथिंग व्हिच एग्जिस्ट, ठीक है। बट टुडे आई गॉट टू नो इट फिजिकली, आई हैड डन इट फिजिकली, मतलब मैंने खुद अपने हाथों से करा, ठीक है। तो आज वो ज्यादा रिलेटेबल था मेरे लिए, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के लिए भी, मतलब इट विल बी समहाउ समडे इट विल बी वेरी रिलेटेबल टू यू गाइस टू, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, आई हैड अ फंक्शन नेम्ड एज वेरीफाई, ठीक है, आई हैड अ फंक्शन नेम एज वेरीफाई, but somewhere somehow it was I had to use this function verify with a different functionality, मतलब इसमें I had to add some features, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, आई हैड टू वेरीफाई समथिंग आफ्टर डिलीटिंग अ पर्टिकुलर, मतलब देयर इज अ मैसेज, I had to delete that message, then I had to verify. So I was somehow confused that what should I do? Should I create a new method, wholesale new method, or somehow can I use this functionality or use the functionality of this particular function, and I can add my implementations, add my features to this particular function, ठीक है। So what I will do, what I was doing, I was overriding this particular method, overriding, ठीक है। I was adding some extra functionalities to this particular function, to this particular function uh, containing its own functionality, ठीक है। इसकी original functionality, the original functionality of this particular function are there, ठीक है, they are existing, but I am modifying it according to my needs, ठीक है, I am modifying it according to my needs, ठीक है। And overriding works in the case of overriding works in the case of inheritance, ठीक है, in the case of inheritance, ठीक है। There is a class A, ठीक है, there is a class A and it has function void function small a, ठीक है, it has some implementations, ठीक है। And then there is a class B which is inheriting from A, ठीक है, which is inheriting from A, ठीक है। There is a class B which is inheriting from A and it has some it has a function definitely void A, ठीक है, it has a function void A, ठीक है। So what this void A is doing, it is overriding this void A, ठीक है। ये क्या कर रहा है, this is overriding this particular void A, ठीक है। This particular void A is getting overrided by this particular void A of different class, ठीक है, of different class which is being inherited from obviously the parent class, ठीक है, ये parent class है। This parent class is being inherited by this particular child class, ठीक है। And in this child class we have a function of the same name, we have a function of the same name. Why we have a function of same name? Because I want this, I want that particular function, I want that particular function A, but with different functionalities, okay, with different functionalities. So I'm somehow using the functionality of the original void A, and also I'm adding some more functionalities according to my needs. So we are somehow reusing the code, okay, we are somehow reusing the code, and we are also modifying the needs, we are also modifying the functionality, we are also modifying the flow of that particular function, okay। So this is how overriding works, okay। And if here I'll introduce the concepts of parameters, so it will somehow become overloading, okay, it will somehow become overloading because I have parameters, there are two functions of same name and I have different parameters, so it will somehow become overloading, it will not remain overriding, ठीक है। make this clear, make this thing clear in your mind, ठीक है। ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का डिफरेंस यहाँ पे समझ लेना, पैरामीटर्स का जहां भी डिफरेंस आ गया वहां ओवरलोडिंग हो गई चीजें, ठीक है, वहां चीजें ओवरलोड हो रही है, बट जहां पर भी दे आर एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है, एंड मेथड को इनहेरिट करके, मतलब क्लास को इनहेरिट करके और उस मेथड में कुछ चेंजेस करे, वहां ओवरराइडिंग यूज होगी, ठीक है। वो देख के समझ आएगा, ठीक है, वो देख के समझ आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ट्राई टू कोड इट आउट अगेन, आई एम सेइंग ओवरराइडिंग इज, हेलो यस 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 सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपन ओवरराइडिंग में जैसे कोई क्लास बनाया, उसके अंदर में मेथड बनाए, तो yes. अगर मेथड में कोई आर्गुमेंट पास करते हैं
कोई डेटा टाइप पास करते हैं पैरामीटर। और फिर मैं चाइल्ड क्लास से कॉल करते हैं, तो वहाँ पे क्या अपना चाइल्ड क्लास, जैसे कोई पेरेंट क्लास हुआ, सन क्लास, उसको सन एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट को। नहीं नहीं, कैन यू रिपीट, मैं समझाना थोड़ा सा। अपन कोई क्लास बनाए, क्लास में अपन मेथड डिक्लेयर किए हैं, और हाँ। मेथड में वहाँ पे मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ पेरेंट क्लास में, ठीक है। और फिर मैं चाइल्ड क्लास से एक्सटेंड कर रहा हूँ पेरेंट क्लास को, और वहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ और उसमें मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ। मतलब कि कहने का मतलब है कि मेथड में पेरेंट क्लास में कोई आर्गुमेंट नहीं है और चाइल्ड क्लास में आर्गुमेंट है, तो वो ओवर राइडिंग होगा कि नहीं होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने बताया ना कि अगर तुमने पैरामीटर को इंक्लूड कर दिया ना कहीं भी, आर्ग्यूमेंट में जो पासिंग पैरामीटर, ठीक है, हाँ आप हाँ एक फंक्शन को पैरामीटर दे रहे हो एंड एक हाँ। फंक्शन को पैरामीटर नहीं दे रहे हो, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पैरामीटर्स ना। नाउ योर फंक्शंस विल बी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स व्हिच यू आर पासिंग, ठीक है ना। सो इट विल समहाउ बिकम ओवरलोडिंग, इट विल नॉट रिमेन ओवरराइडिंग इन दैट केस, ठीक है। सर तो मैं ऐसे कर रहा था कि मैं आज वो इक्लिप्स पे कर रहा था, इस प्रोग्राम को अपने से बना रहा था, तो इसमें कोई एरर नहीं आ रहा था सर। तो एरर क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? नहीं नहीं, मतलब कि तो फिर वो हो क्या रहा है, मतलब कि वहाँ पे ओवर राइडिंग भी नहीं हो रहा है, तो फिर हो क्या रहा है वो प्रोग्राम, मेरा क्या का प्रोग्राम है वो? मैंने बोला तो ओवरलोडिंग हो रहा है। ओवरराइडिंग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? नहीं, आपने पैरामीटर्स का डिफरेंस इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। अच्छा अच्छा, मतलब कि अपन यहाँ पे तो फिर तो सर मेथड ओवरलोडिंग में तो अपन उसमें इनहेरिटेंस थोड़ी करते हैं, इनहेरिट थोड़ी करते हैं। तो इनहेरिट तब नहीं करते ना जब सेम फंक्शन सेम क्लास में प्रेजेंट हो। इनहेरिट तब हाँ, नहीं करते जब सेम क्लास में प्रेजेंट हो। यहाँ पे तो डिफरेंट क्लास की बात हो रही, तो इनहेरिट कर लो, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो अपना ओवरलोडिंग हो रहा है इसका मतलब, वो मतलब कि अपन ओवर उसमें डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कि अपन ओवर राइडिंग एक तरह से ऐसे सिंपल समझो कि अपन उसमें मेथड के अंदर में अपन डेटा टाइप पास कर रहे हैं, है ना। मतलब कि डिफरेंट, मतलब डेटा वे ऑफ पैरामीटर चेंज हो रहा है मेरा। Yeah. Yep, yep, yep. हम्म। You got it right. ओके सर, थैंक यू। Yeah. So please, yeah, Harshvardhan, I was in English only, but that just to make clear one thing, I had to switch to Hindi. I'm sorry. एक बार ओवरलोडिंग और हाँ ठीक है, वो हो गया ऋषभ। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों एक्सप्लेन कर दिया, रिलेट कर दिया। रिलेट करिए, अब रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग, ठीक है, अब रिलेट कर पा रहे हो क्या? नहीं? हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है। So that is a very basic thing about overloading, overriding, compile time polymorphism, runtime polymorphism. These are just the names, naming conventions है, ठीक है। According to the needs, you have to decide. You have to decide that what you want to use, ठीक है। And this particular thing, according to my personal experience, overriding is the one which is used widely, ठीक है। Overriding is the one which is used widely. You just override, you just extend a particular function, okay, you just extend over and a particular function according to the whatever new needs, whatever new things which you have, which you want to do basically, okay। So that's it about polymorphism, यहीं तक ही है, ठीक है, यहीं तक है। ज्यादा मतलब इससे ज्यादा तो इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ है नहीं। तो पॉलीमॉर्फिज्म को यहाँ से हटाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को यहाँ से हटाते हैं। अब एक बारी बात कर लेते हैं किसकी, एक बारी बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन की, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन इज बेसिकली, मतलब आप लोगों ने ये बहुत सुना होगा कि showing only the essential thing and hiding the unnecessary details, this and that, ठीक है। So abstraction is basically, मतलब एब्स्ट्रैक्शन की कुछ चीजें होती हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज व्हेन वी हैव एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, व्हेन वी हैव एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या, वो कौन सी क्लास होती है जिसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, जिसमें कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्शन वर्क्स अराउंड दीज थिंग्स ओनली, ठीक है। कि एक ऐसी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट, मतलब उसे डिफाइन करते हुए हमने इनिशियलाइज करा दैट इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमने जहां यूज करा, सो दैट पर्टिकुलर क्लास विल बी कंसिडर एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बस जस्ट कीवर्ड यूज करने से हो जाएगी? नहीं, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। अब व्हेन आई एम सेइंग एटलीस्ट, तो हाँ एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा होंगे तो दैट विल नॉट समहाउ हार्म अस, ठीक है। So this particular thing
मतलब ये these are just the conditions of how to define an abstract class, ठीक है? Nothing much. Or I guess, not I guess, there can be normal methods, मतलब the methods and functions which are not abstract, ठीक है? These methods can be also present inside this particular abstract class, ठीक है? This particular abstract class, ठीक है? Okay. अब ध्यान से समझना, ठीक है? Try to understand the scenario which I'm trying to tell you guys, convey to you guys, ठीक है? Basically what happens inside abstract method is it doesn't contains implementation, ठीक है? It doesn't contains implementation. If I'm defining some method using abstract data type, it will not contain any implementation, ठीक है? See, there are normal functions. Suppose a function, again a function sum, okay, it will contain some implementation. It will have an integer a which will be adding to integers b and c, which I'm getting somewhere as a parameter, ठीक है? मैं यहाँ पे parameter की तरह मुझे दो integers मिल रहे हैं, ठीक है? दो integers मिल रहे हैं and I'm adding them. I'm simply adding them and storing them in a third variable, ठीक है? And I'm returning a, ठीक है? I'm returning a. ठीक है? ये मेरी implementation. I have implemented this particular piece of function, this particular piece of block, ठीक है? But what if I have declared something, ठीक है? What if I have declared something, a variable sum, ठीक है? A variable method sum, and it is an abstract method. It doesn't contains the implementation, ठीक है? It has no implementation. But what is the need for its existence? ठीक है? What is the need for its existence? It totally depends upon us, ठीक है? Totally depends upon us how we want to add the implementation for this particular abstract function, ठीक है? Now there can be different scenarios, ठीक है? For a particular scenario, this sum function may work as a plus b, ठीक है? And for some another scenario, it may work as a plus twice into b, ठीक है? So there are two different scenarios. There can be multiple scenarios. So just a basic understanding is we are only declaring it, but there is no implementation of that particular function. So those type of functions are known as abstract methods, and the class containing abstract methods is known as abstract class, ठीक है? Can we extend multiple class to a single class, like class B extends class A, extends class C? Can we extend multiple classes? Yeah, this is not written like this. मतलब ठीक है, मतलब I got your question. We can do this, but it is मतलब it is a way of inheritance, ठीक है? It is a way of inheritance. We can inherit two classes in a single class, ठीक है? मतलब there can be two parent class for a single child class, ठीक है? So we can do that, ठीक है? We can do that, no problem in this, ठीक है? अभी abstraction में थोड़ा बहुत समझ आ गया. If you guys are clear with the abstraction, you can drop yes in the chat, ठीक है? So that we can move forward. ठीक है? थोड़ा फिजिकली रिलेट कर पाओ, अगर फिजिकली रिलेट कर पाओ, काइंडली रिपीट, ठीक है? व्हाट अबाउट अदर्स, ठीक है? आर यू गाइस क्लियर विद द थिंग्स? ठीक है. Abhishek, just understand it through a thing that I'm inheriting this abstract class, ठीक है? I'm inheriting this abstract class and it contains a lot of abstract methods, ठीक है? It contains a lot of abstract methods, ठीक है? So what is the benefit of inheriting this abstract class? I'll not get those unnecessary methods, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ क्या है? यहाँ पर सिर्फ methods defined है, there is no implementation. तो मेरे पास जब मेथड एक डिफाइंड है, बस उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो मेरे पास कोई अननेसेसरी मेथड उठ के नहीं आएगा. आई विल नॉट हैव सम अननेसेसरी मेथड्स विद मी. आई विल हैव ओनली दोज मेथड्स, ठीक है? आई विल हैव, सपोज देयर इज अ क्लास व्हिच हैज ऑल द मेथड डिफाइंड एज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? तो कोई भी मेथड मेरे पास उठ के नहीं आएगा. देयर विल बी नो मेथड व्हिच विल हैव एनी ऑफ द इंप्लीमेंटेशन. सो व्हाट आई विल डू, आई विल इनहेरिट दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास which will have abstract methods inside it, and according to my needs, I'll provide the implementation of the particular method which I want to use, ठीक है? अब मेरे पास इस abstract class में 4 methods है, ठीक है? sum, multiply, divide और subtract, ठीक है? ठीक है? So I got these 4 functions defined inside my abstract class, but there is no implementation, obviously. So what I will do, I will inherit this abstract class and I will provide the implementation to the particular functions according to my need. If I want to use sum,
So I will provide implementation to function sum. ठीक है, I will provide implementation to function multiply only. ठीक है. अब you may ask कि sir what is the need to मतलब what is the need to what is the need of abstract class? ठीक है, what is the need of abstract class? If it is just defined, if it is not implemented, and if we have to implement it by our own, so what is the use? What is the need of the abstract methods? ठीक है. The need is, the requirement is to make it generic. ठीक है, to make it generic, to make it available to everyone generally. So that is the basic need, basic requirement which we wanted to serve. So we served it through abstract methods. Abhishek, that's it. What is abstract method and abstract class? यही समझ में आया. यार देखो, abstract class is something which contains abstract methods. ठीक है, and abstract methods are those methods which are just declared without any implementation. They do not contain any implementation, and those kind of methods are known as abstract methods. Very simple, very clear. ठीक है, nothing fancy in this. Copy construct, please. I'm coming to it, man. I read your message previously also. I'm coming to it. I just don't want to jump into constructor somehow. You know, that's why I'm trying to pick it in the end. ठीक है. दो चीजें हो गई हमारी, एब्स्ट्रैक्शन हो गई, इनकैप्सुलेशन हो गई. काफी ब्रीफ में डिस्कस करा, बट या दैट्स व्हाट आई बिलीव वी कैन डू एज ऑफ नाउ. ठीक है, सुपर दिस बता दो सर. सुपर में यार देखो, सुपर में क्या होता है वो, चलो पहले सुपर और दिस ही डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, बहुत लोग पूछ रहे हैं, आई वांट समवन टू अनम्यूट एंड टेल मी कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी सुपर से. मतलब क्या कुछ समझ आया, कुछ बिल्कुल ही समझ नहीं आया, या क्या हुआ ऐसा? मतलब जो सुपर में इतना डाउट है, मतलब बहुत जनरल चीज है, मतलब इसमें कुछ मुझे सर मैं सुपर तो समझ गया हूँ सर. मैं सुपर तो समझ गया हूँ सर. हेलो, दिक्कत कहाँ है? हाँ जी, दिक्कत कहाँ है? हाँ जी. हेलो, बताइए बोलिए. सर सुपर जैसे सर अपन क्लास में जैसे सर अपन वॉइड बनाया, अपन मेथड थोड़ी बनाया, और उसमें आवाज एको हो रही है. ऋषभ, आप बोल रहे हैं बड़ी. हेलो, हाँ, बेटर बताइए. हाँ, अपन कोई पेरेंट क्लास बना रहे हैं. पेरेंट क्लास में अपन मेथड के अंदर में कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, पैरामीटर वगैरह, और फिर मैं उसे चाइल्ड क्लास से उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, और उस जो डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ. अगर स्ट्रिंग है तो कोई वहाँ पे स्ट्रिंग का वैल्यू पास करूंगा, इंटीजर है तो इंटीजर का वैल्यू पास करूंगा, राइट. तो वो अब वहाँ पे अपने को सुपर कॉल हो जा रहा है. मैं ऐसा समझ रहा हूँ सुपर को, लेकिन सर दिस का फंक्शन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि दिस क्लास के अंदर में कैसे कॉल हो रहा है. ठीक है, Samara, this is used in पर दोनों को सर रिलेट करके बता देते हैं. Samara, this is used in a पर दोनों को सर रिलेट करके बता देते हैं. SK, I believe आपकी साइड से कुछ इशू है. Your voice is. हेलो सर. हाँ जी, I'm audible. हाँ जी. सर सुपर कीवर्ड और दिस कीवर्ड, तो सर सुपर कीवर्ड फंक्शन क्लास को कॉल करने के काम आता है क्या? जैसे कि अगर हम चाइल्ड क्लास में उसको डिक्लेयर करते हैं तो वो उसकी पेरेंट क्लास को उसकी सब क्लास को कॉल करते हैं. मैं बताता हूँ. दिस कीवर्ड का क्या मतलब? मैं बताता हूँ. ओके सर. ठीक है, देखो, सो भारत ने जो लिखा, आई गेस इट कैन मतलब इट कैन बी, इट मस्ट बी क्लियर टू यू. ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज है. पहले आते हैं सुपर पे. ठीक है, अब ये क्या है, मतलब ये एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह काम करता है. इट इज जस्ट अ रेफरेंस वेरिएबल. ठीक है, अब ये रेफरेंस वेरिएबल करेगा क्या? ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल किसको जाके रेफर करेगा, किसकी तरफ पॉइंट करेगा? ठीक है, ये रेफर करता है टुवर्ड्स इमीडिएट, इट रेफर्स टुवर्ड्स इमीडिएट पेरेंट्स क्लास ऑब्जेक्ट. ठीक है, इमीडिएट पेरेंट्स क्लास ऑब्जेक्ट. ठीक है, try to understand what I'm saying. ठीक है, try to understand what I'm saying. I'm saying that there is a parent class. ठीक है, there is a class A. ठीक है, and it contains obviously some implementation. Then there is a class B which is extending class C, which is inheriting class A. ठीक है, which is inheriting class A. ठीक है, now I am creating an object for class B. ठीक है, I'm creating an object for class B. But can you try to visualize
ठीक है, कैन यू ट्राई टू विजुअलाइज कि भाई whenever I'm creating an instance, whenever I'm creating an object of subclass, ठीक है, this class B is subclass of class A, ठीक है, this B is subclass of A, whenever I'm creating an object of a subclass, ठीक है, तो definitely a parent object will have an instance too, a parent object will have an object too. The object for the parent class will also get created implicitly, ठीक है, it will automatically get created, which is referred by super, ठीक है, which is referred by super. So whenever you see super, it is referring to the parents class object, and the parent class must be the immediate parent, ठीक है, must be the immediate parent. So for class B, the immediate parent is class A, and there may be a class C which is extending class B. So for class C, the immediate parent is class B, ठीक है. So you have to go to the immediate parent, and you have to see that it will have an object definitely when I'm creating the instance for a subclass, ठीक है, and that particular object of the parent class will be referred by super. So this is what super in very lame term means. इसके अब बताइए, आपकी आवाज इको कर रही थी आपके माइक से, इसलिए मैंने इको कर रही थी आपके माइक से, इसलिए मैंने हेलो सर। कर सर मैं ये पूछ रहा था कि जो सुपर कीवर्ड है तो वो अपने से ठीक ऊपर वाली मतलब वन जंप करता है बस एक क्लास को। वन जंप नहीं, पेरेंट क्लास पे जाता है, इमीडिएट पेरेंट वन जंप नहीं, पेरेंट क्लास पे जाता है, इमीडिएट पेरेंट क्लास, जो उससे तुरंत ऊपर वाली क्लास होगी उसी पे जंप करेगा। अगर हम उसे 2-3 क्लास का जंप कराना हो, पेरेंट क्लास, जैसे कि पेरेंट क्लास के अंदर पेरेंट क्लासेस हैं, हमने क्लास ए बनाई, उसके अंदर क्लास बी को एक्सटेंड कर दिया ए से, और फिर बी को ही एक्सटेंड कर दिया दूसरी क्लास से। हाँ, तो सी के हाँ। अंदर अगर हम जब सुपर कीवर्ड लगाए तो बी को एक्सेस करेगा या ए को? बी को एक्सेस करेगा। मैंने बोला ना इमीडिएट पेरेंट पे जाएगा, बी को मैंने बोला ना इमीडिएट पेरेंट पे जाएगा। तो फॉर अच्छा, उससे जो द पिछली इमीडिएट पेरेंट इज क्लास बी, द इमीडिएट पेरेंट इज क्लास। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया सर? समझ आ गया। ये सर, और सर कि ओप्स को इंप्लीमेंट कैसे करें सर, कहाँ पर प्रैक्टिस करें इसकी? oops की प्रैक्टिस देखो, पहले तो आप मैंने म्यूट कर दिया। देखो, आई एम प्लानिंग टू ऑब्वियसली टेक सम क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब यहाँ पे मेन मोटिव क्वेश्चंस करना ही है, ठीक है। इट इज जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस ताकि थोड़ा जेनरिक हो जाए चीजें, थोड़ा सा सेम पेज पे आ जाए, ठीक है। डेफिनेटली आई विल पिक क्वेश्चंस फ्रॉम टुमारो, ठीक है ना, एंड देयर इन विल गेट डेफिनेटली सम गुड आइडिया ऑफ द ओप्स पर्टिकुलरली, ठीक है। अब आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है तो आई कैन गिव यू क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन से कि भाई क्वेश्चन दे दो आप सब, तो मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है। बट थियोरेटिकली क्लियर हो जाना, ठीक है, एंड बेसिक चीजें खुद से कोड करके देख लेना। अगर मैं बेसिक चीजें भी कोड कराने बैठ गया ना कि इनहेरिटेंस को ऐसे कोड करते हैं, तो वो थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट दिस कि आप लोग भी पर्सनली सारी चीजों को कोड करके देख लो एक बार, ठीक है। अगर नहीं होंगी तो देन देयर इज नो वे फॉर मी टू ऑब्वियसली कोड इट आउट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है एक्स्ट्रा, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है एक्स्ट्रा, बट ठीक है, दैट इज सम अदर थिंग, ठीक है। तो सुपर और दिस में भाई अब बता दो किसी को कोई भी डाउट, शंका, आशंका, कुछ भी, इफ यू हैव एनी डाउट इन सुपर और दिस। मतलब बहुत सिंपल सी टर्म्स है यार, मतलब इतनी कोई डिफिकल्ट तो मुझे लगी नहीं कि मतलब इतना सबको डाउट हुआ। बताओ जल्दी से। एक भाई को कॉपी कंस्ट्रक्टर पूछना था, मैं उसके कब से वेट कर रहा होगा वो। जल्दी बताओ कोई डाउट है सुपर दिस में, और जो भी अभी तक पढ़ा है ये सब प्रोवाइड क्वेश्चंस फ्रॉम मेरे साइड, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड क्वेश्चंस ऑफ भारत। आई वांट फीडबैक अभी तक जो समझा, व्हाटएवर आई हैव टॉट यू गाइस टिल नाउ इन टुडेस क्लास, इज इट क्लियर? पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन का एक अच्छा आइडिया लग गया है कि नहीं, इंक्लूडिंग द सुपर इन दिस कीवर्ड? जल्दी ड्रॉप इट इन द चैट फटाफट। यू इट इज 9:01, सो यस जल्दी। ठीक है, हो गया ना आइडिया? Discord, Dhananjay. Give it a second, man. Give me a second. भाई इतना तो मुझे ना याद भी नहीं रहती।
ठीक है, ये है। ठीक है, we can sum up the session, except the person who was having doubts in copy constructor, you can stay. ठीक है, you can stay, and except I believe yes. ठीक है, if someone has any personal doubt, so that person can stay, because your session must be started, which is from 9. So rest of you guys can leave for now, and ठीक है, that's it for the session. We can wrap it up. Thank you so much for joining, and make sure to revise it by your own again. ठीक है, मैंने जो पढ़ाया that is okay, but you have to revise it by yourself. ठीक है, तभी understanding बनेगी. Make this thing clear. Right? Thank you so much. Thank you. We can wrap up the session, and you guys can leave. If someone has any doubt, you can stay. I'll message you on Discord for my doubts. That's your wish. Sir, access modifier. Access modifier, man, it's public, private, protected. और सर पब्लिक और प्रोटेक्टेड को सर प्रोटेक्टेड कैसे सर मतलब एक्सटेंड करते हैं, उसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आता सर, कोडिंग करके बता सकते हैं क्या सर? अभी कोडिंग करके मैं किसी क्वेश्चन में कवर कर दूं आपके लिए? कैसे सर? मैं किसी क्वेश्चन में कवर कर दूं आपके लिए पर्टिकुलर चीज जो आप पूछ रहे हाँ हाँ हो? आस्किंग कि प्राइवेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक, ये पूछ रहे हो ना? प्राइवेट तो सर एक्सेस होता ही नहीं उतना, तो उतना उसका आइडिया लग गया है। बस प्रोटेक्टेड का सर कि प्रोटेक्टेड एक्सेस करते हैं उसमें एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, इंपोर्ट सर ने बताया कर, लेकिन मेरे को उतना से क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, I'll एक बार सर कोड कर देते तो बेटर होता, मतलब कि ज्यादा क्लियर हो जाता। ठीक है, मतलब उसके लिए आई विल डू व्हाट, आई विल ट्राई टू टेक अ क्वेश्चन व्हिच विल हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, सो दैट वो आपको क्लियर हो जाएगा। द थिंग मतलब उसमें कुछ इतना वो नहीं है, ठीक है, मेजर चीज नहीं है। बट हाँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेना, कोड से मैं समझा दूंगा, ठीक है, बट ये समझ के आ जाना कि पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट में मेजर चीजें क्या डिफरेंट, ठीक है, कोड में करके दिखा दूंगा, ठीक है, कोड की टेंशन। सर मैं मतलब आज ही देखा था, मैं पब्लिक वगैरह में डिफॉल्ट और प्राइवेट प्रोटेक्टेड था, मैं तीनों समझ गया हूँ। मैं प्रोटेक्टेड में है कि सर उसमें डिफरेंट क्लास डिफरेंट पैकेज, बट इनहेरिटेंस उसमें मैंडेटरी कैसे नहीं हो रहा है, मतलब उसको एक्सेस कैसे कर रहा है, बस वही मेरे को कैसे हुआ है। चलो ठीक है, मैं उस पर एम्फेसिस करता हूँ, उसकी टेंशन, ठीक है, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर या स्वभारत कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब ये है कि मतलब सपोज वी हैव अ क्लास, ठीक है, मतलब इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि देयर इज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास व्हिच गेट्स क्रिएटेड, ठीक है, व्हिच गेट्स क्रिएटेड यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, एंड यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ डिफरेंट क्लास, ठीक है, सो दैट इज व्हाट I can explain you copy constructor in a very lame language, ठीक है, मतलब it has the functionalities of a constructor one. Suppose there is a constructor one and I'm initializing constructor two, so I'm using the functionalities, I'm using the definition, I'm using the features of constructor one and constructor two. So while doing this, ठीक है, अब मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट से मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में जो डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही आते हैं ना, सो कंस्ट्रक्टर इज नथिंग, मतलब ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट हैविंग द फीचर्स, हैविंग फंक्शनलिटीज ऑफ अ कंस्ट्रक्टर. So if I'm somehow defining a constructor using some already defined constructor, that is what we mean by copy constructor, ठीक है, मतलब इतना तो नाम से क्लियर है, मतलब कि इतना कुछ मतलब इसमें कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, चलो स्वभारत ठीक है, क्लियर हुआ क्या थोड़ा सा? ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है गाइस, थैंक यू, आप भी लीव कर सकते हो, there is you're getting late for your session, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं।